शुरू सेकेंड लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें से कुछ टॉपिक रिमूव किया है, ठीक है, बट मोस्टली जो भी है वो मैंने पूरा डाला है। जो रिमूव किया है मैंने उसको हटा दिया है। ये हमने फर्स्ट जो पार्ट था ना चैप्टर का, उसमें हमने ये वाले टॉपिक को पढ़ा था, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल एंड अ बार मैग्नेट। किसका कभी एग्जैक्टली तो ये मतलब what are the similarities between a current carrying coil and a bar magnet? A current carrying coil is equivalent to a bar magnet kept along its axis. Kept along its axis मतलब ऐसा, ये कॉइल है यहाँ पे और उसके एक्सिस के अलोंग बार मैग्नेट है, और ये दोनों में अगर तुम फ्रंट व्यू और बैक व्यू देखोगे तो you will find that when you are looking at the north pole of the bar magnet, at the same time you are looking at the north pole of the coil. मतलब कॉइल का भी दो फेसेस है और दो पोल्स है. This is one thing that you need to set in your mind. If we look towards the current carrying coil from the right hand side of the coil, the direction of the current in it seems to be clockwise, which is equivalent to south of an equivalent bar magnet. If observed from the other side, the current seems to be anti-clockwise, which is equivalent to north pole of the equivalent bar magnet. A bar magnet is similar to इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने बार मैग्नेट के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ये चैप्टर के. Due to its similarity with electric dipole, many times you may find it easier to visualize the magnetic field of a bar magnet and its behavior when it is kept in some external magnetic field. But you need to understand that a current carrying coil is also one option, and normally there are several number of turns in one coil to produce significant amount of magnetic field. In figure, only one turn is shown for the purpose of illustration. In case of a coil having several turns, we always multiply the number of turns with the result. Let there be n number of closely spaced turns in a coil of radius r carrying current I. The magnetic dipole moment of the coil will be NIA, n times Ia, and A can be substituted by pi r square. Now visualize the bar magnet of equal strength whose magnetic pole strength is plus minus m, small m, and magnetic length is equal to L. Magnetic dipole moment of bar magnet can be written as m into L. m into हम 2L भी लिखते थे, but that was in the case of dipole. L can also be considered as magnetic length. If the bar magnet and current coil replace each other, then ML will become NIA. It's the same thing. So you have many possibilities with different values of M and L. The direction of magnetic dipole moment of bar magnet is from south to north. In case of current carrying coil, we can use the right hand rule for the direction of magnetic dipole moment vector. If we align our right hand in such a way that direction of current is same as we curl our fingers, then the thumb points in the direction of magnetic dipole moment vector of the coil. In figure 5.1, we can see that current coil and equivalent bar magnet have their magnetic dipole vectors in the same direction. So here what you do is you keep your thumb like this and curl your finger, so that the direction in which you are curling the finger, when you are looking from the left side, the thumb is pointing towards your left, right? Your left with the right hand.
And if you are going that side, what you do? Yeah, you do the same thing. Cannot do anything else. उधर से भी तुम देखोगे तो वही हो जाएगा. So magnetic dipole moment is in from south to north, which is the case of bar magnet, and with the in the case of coil, with the help of right hand thumb rule. The next important point you must remember: when a current carrying coil or a bar magnet are exposed to some external magnetic field, then the torque applied by this magnetic field tries to align the magnetic dipole moment vector of both in its own direction. मतलब किसी कॉइल को या किसी बार मैग्नेट को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ये दोनों के डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को अपनी डायरेक्शन में, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा. Hence, the current coil rotates in such a manner that its plane becomes perpendicular to the external magnetic field. So that is the position of equilibrium. The bar magnet also gets aligned with the external magnetic field lengthwise. Coil aligns itself area-wise, and bar magnet aligns itself lengthwise. But in both cases, the net result is the magnetic dipole moment vector gets aligned with the external magnetic field. You can look at the above discussion from one more perspective. We know that one magnetic field is of the bar magnet or the current carrying coil, and the other is the external magnetic field applied. When the bar magnet or current coil finally gets aligned with external magnetic field, then both magnetic fields are added together to increase the net magnetic field intensity in the surrounding space. So now what is happening? Now the external magnetic field and the magnetic field of the coil or the bar magnet, they are all in the same direction. They are all in the same direction. That means they can get added. There is no need of vector addition here because the directions of B are the same for all. So you can add them and the net magnetic field for that area, that space increases, gets added, you can say. Now visualize that you have several tiny bar magnets with you. If you combine some of them together in such a manner that their magnetic dipole moment vectors are parallel to each other, then what you get is a bigger and more powerful magnet assembly. बिल्कुल सही है, क्योंकि सबके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब सबके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में, तो मतलब तुम्हें एक बड़ा मैग्नेट मिलेगा. ये सारे छोटे मैग्नेट्स को हमने अलाइन किया. There is no external magnetic field. We just aligned them with respect to each other and we got a bigger magnet. Suppose we have in total 9 small magnets. For each of the magnet, the pole strength is plus minus m and length L. Hence, the magnetic dipole moment of each magnet is ml. Let us align these 9 magnets as shown in the figure. For the assembly shown in the figure, the pole strength becomes plus minus 3m. ये साइड 3 और ये साइड 3, नॉर्थ की 3, साउथ की 3, बीच की काउंट नहीं करते हम, because we have assembled them, so there are no poles in between. Poles are only at the edges, and the length becomes 3l. L 3l. Hence the net magnetic field will become 3m times 3l, which is equal to 9 ml. So if the magnetic magnetic dipole moment vector for each magnet is ml, and if there are 9 such magnets, then it becomes 9 times, which is not a difficult thing to imagine. Hence the net magnetic dipole moment vector is equal to 9 times the magnetic moment of a single magnet. You can combine these 9 magnets in any way you want, but the net moment will always be 9 times the magnetic moment of a single magnet, provided all magnetic moments are in the same direction. But if you reverse 4 of them, if you reverse 4 of them, then only magnetic moment that remains will be equal to the magnetic moment of
only one small magnet, then only the magnetic moment that remains will be equal to the magnetic moment of one small magnet. This number is just 9. But if you visualize more numbers of such small magnets, then the random distribution of all small magnetic moments can add up to 0. And finally, you may not get any magnetic moment at all. मतलब अगर इसमें से 4 को मैंने रिवर्स कर दिया तो ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। 4 को कैंसल कर देंगे, एक बचेगा। ऐसा है, कैंसल हो जाता, 0 हो जाता, नलीफाई हो जाता मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द सिचुएशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल इससे समझ में आता है कि क्यों कुछ चीजें मेटल की बनी होती है लेकिन मैग्नेटिक नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उसके अंदर जो पोल्स है या पोल्स या मैग्नेटिक मोमेंट वाले जो मॉलिक्यूल्स है, उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का है कि वो आपस में एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसल आउट कर रहा है। इसलिए सपोज एक मटेरियल है, उसमें से मोस्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट हो गए और एक रह गया, एक बच गया, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वीक होगा। सारे कैंसल आउट हो गए तो नॉन मैग्नेटिक होगा, कोई भी कैंसल आउट नहीं हुआ तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। यही तो हो रहा है, यही है वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। Every atom of magnetic material is like one complete magnet with its north pole and south pole. For example, iron is a magnetic material, but any piece of iron may not show magnetism due to random alignments of these atomic magnets. Atomic magnets का alignment अगर proper हुआ तो ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब सारे अलाइंड नहीं है, कुछ ही अलाइंड है, तो ये मैग्नेट वीक हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही रैंडम अलाइनमेंट है तो देयर इज नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इन दिस, मतलब नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एटम, इजी है, ये भी बहुत सिंपल है। ओरिजिनल कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट है। सो इसलिए हमने पहले चार्जेस पढ़ा, फिर चार्जेस को मोशन में लाया करंट, और फिर उससे क्या रिजल्ट आता है, दैट इज मैग्नेटिज्म। दैट इज योर, इससे पहले वाला चैप्टर, इसका नाम क्या था? मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। And then there is magnetic materials, because those moving charges, they make up magnetic materials. And then with these magnetic materials in motion, we produce current again. That's the next chapter. So all is in, you can say, सबके बीच में एक relation, एक continuation है. So original cause of magnetic field is electric current. It was first discovered accidentally by Oersted that electric current produces magnetic field around it. 10th क्लास, मतलब वो उसके एक्सपेरिमेंट तुम्हें याद होंगे। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर लूप, फिर सोलेनॉइड, और सबके अराउंड एक वेराइटी था मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने यूटिलाइज किया। Let us understand that in case of magnetic materials the reason is the same. After having discussed the equivalence between current carrying coil and a bar magnet, let us understand the magnetic moment of the atoms. In an atom, electrons revolve around the nucleus. Electrons revolving in orbit of an atom are also equivalent to current carrying loops. सही है कि नहीं? अगर वो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो दे रिप्रेजेंट करंट कैरिंग लूप्स, बिकॉज दैट ऑर्बिट इज इमेजिनरी path, or you can say a conductor in which charges are moving. That means it's a current carrying loop. These revolving electrons have magnetic moment associated with them. So इसका magnetic moment हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। So what we point our finger towards the velocity and the direction in which
we point our finger towards the electron, that is charge particle, from the center, and we curl our fingers towards the motion, or you can say rotation of electrons. And then the direction in which the thumb points is the direction of the net magnetic field associated with that moving charge. These revolving electrons have magnetic moments associated with them. Figure shows electron revolving in an orbit of an atom that appears to be revolving होना चाहिए, in anti-clockwise sense. It is clear that direction of conventional current is clockwise. So always we talk about conventional current. That's why B is not up. B is down, because the direction of conventional current is opposite to the direction of movement or motion of electron. That's why B is down. Thus the atom behaves as a bar magnet with orientation as shown in the figure. This is equal to this. Right? This is a bar magnet. Magnetic field is uh, from south to north, magnetic dipole moment. And that is, magnetic dipole moment is always inside the magnet. Magnetic field is always outside. So due to this magnetic dipole moment vector, there exists a magnetic field outside, which is B, which is outside the magnet from north to south, which is also perfect. So B और M के direction same है, ठीक है? हम्म B outside, M inside, direction same. अगर इनसाइड साउथ टू नॉर्थ बोला, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ हो जाता है, अपने आप हो जाता है, ठीक है? बी इनसाइड, एम आउटसाइड, ऑलवेज रिमेंबर. Okay, so let the speed of electron be v, radius of the orbit be r, and the time period of revolution of an electron in its orbit be capital T. The current associated with the revolving electron is given by charge upon time, ठीक है? Which is small e by t. T is the time period. Now we can express the time period of electron in terms of its angular speed 2 pi by omega. So I is equal to E by T, which is E omega by 2 pi, or EV by 2 pi r. So omega को वो लोग ने V by r लिखा है. EV by 2 pi r. The magnitude of magnetic moment associated with circular loop of area A and current I is given by IA, capital M IA. NIA is in terms of number of turns. For electron loop, A is pi r square, so M is IA. I की वैल्यू अभी हमने ढूंढी है, EV by 2 pi r into pi r square. pi कट, r कट हो जाएगा, half EVR. Angular momentum of the electron is given by L, angular momentum, which is r times mv. What is r? R is the radius of circular path, ठीक है, times mv, momentum. Radius times any linear quantity is the angular quantity. So angular momentum is radius times linear momentum, ठीक है? The angle between r and v is 90, and this is a cross product. You might remember it from class 11th. So we can write mrv sine 90, which is mrv. So magnitude of magnetic moment is given by, अच्छा यहाँ पे L की वैल्यू आ गई mrv, and magnetic मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज, यहाँ पे हमने लिखा था हाफ EVR, आई थिंक सो, क्योंकि M इज इक्वल टू हाफ EVR में यहाँ पे V, नहीं क्या मिसिंग है यहाँ पे, मुझे V मिसिंग लग रहा है. V की वैल्यू डाली,
नहीं, 1 सेकेंड। ओके, एल अपॉन एम, और यहाँ पे वी आर की जगह एल अपॉन एम आएगा, तो ई एम, ई एल अपॉन 2m, करेक्ट। वी आर की वैल्यू डालिए, तो L के टर्म्स में मैग्नेटिक मोमेंट को लोग ने रिप्रेजेंट किया है। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट द इक्वेशन 2 एज m इज इक्वल टू माइनस ऑफ E बाई 2m इंटू एल वेक्टर। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इफ यू कैन सी इन दिस फिगर। जब L के टर्म्स में हम मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे से, इसलिए माइनस की साइन डालिए वेक्टर फॉर्म में। This is because electron is negatively charged. Direction of both vectors are perpendicular to the plane of the orbit. If there were a positively charged particle instead of electron, then the direction of angular momentum and magnetic moment would have been the same. The ratio of magnetic moment and angular momentum is known as gyromagnetic ratio. मतलब what they are trying to build here is कि एक एटम के अंदर हाउ वी कैन फिगर आउट कि वो एटम का वो एटम से बने हुए मैटर का जो नेचर है वो मैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा। सो देयर मस्ट बी सम क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद द एटम। एक तो क्वांटिटी हमने ढूंढ लिया दैट इज कैपिटल एम, दूसरा ढूंढ लिया कैपिटल एल। अब एम और एल को कनेक्ट कर दिया वी आर को रिप्लेस करके, ठीक है। तो एम और एल को जब कनेक्ट किया तो हमें समझ में आया कि एम और एल, सॉरी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर दैट इज कैपिटल एम पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज विच इज रिवॉल्विंग, ठीक है। तो वो हमने एक समझ में आ गया। दूसरा और एक चीज वो लोग ने बताया है दैट इज एम और एल का रेशियो, इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और इलेक्ट्रॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। तो यहां पे m बाय एल इज इक्वल टू ई बाई 2m लिखा है। मुझे बताओ इसमें E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज द सेम एज प्रोटॉन, सो देयर इज नो डिफरेंस। बट m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे फर्क आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम है, ठीक है। सो यहां पे ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है उसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो थोड़ा सा बड़ा होगा comparatively to proton, which is 8.8 times 10 to the power 10 coulomb per kg. According to Bohr's theory, जो हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पढ़ने वाले हैं, एटम्स में खैर, the angular momentum of electron is quantized and it can be expressed as an integral multiple of h by 2 pi, and h is Planck's constant, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.626 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। सो ये जो एम आर वी एल की वैल्यू जो हमने ढूंढी है, इट इज n टाइम्स h बाई 2 पाई, वेर n इज 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। सो आर वी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम आर वी, एंड आर वी की जो वैल्यू हमने जो पहले सब्सटीट्यूट की थी वही हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आर वी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम। सो इक्वेशन 3 में से आर वी की वैल्यू, इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 3 क्यों लिखा है? हाँ, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, आई एम सॉरी, यस। कैन यू टेल मी आर वी की क्या वैल्यू होगी? 2m बाई ई। यहां पे देखो, ये 2 उधर चला जाएगा, E नीचे आ जाएगा, 2m बाई ई। ये आर वी की वैल्यू है, ये हमने आर वी की जगह पे डाल दी 2m बाई ई। ई और 2 को वो साइड लेके गए, सो वी गेट हाफ E टाइम्स एन एच बाई 2 पाई एम। और अगर ये 2 2
मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया तो n टाइम्स EH बाय 4 पाई m। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम लोग एक वो प्लैंक्स कांस्टेंट के जो फॉर्मूला है जो बोर ने बताया था उसके टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग. If it is the first orbit, then its value is less. If it is second orbit, then its value goes on increasing, second, third, and subsequent, because n यहाँ पे multiply हो रहा है. The minimum value of magnetic moment for the electron will be for the first orbit of the electron. So m minimum की वैल्यू निकाली वो लोग ने EH by 4 pi m, n की जगह 1 ले लिया है, सारी वैल्यूज डाली है, h की वैल्यू भी वो लोग ने बताई थी. So सारी वैल्यूज डालने के बाद we get 9.27 times 10 to the power minus 24 ampere meter square. M minimum is the minimum value of magnetic moment of electron and it is known as Bohr magneton. Bohr magneton. According to the classical model of an atom, the electrons are thought to be revolving in orbits as well as spinning about their own axis. In addition to the orbital magnetic moment, electrons have their intrinsic magnetic moments due to their spin, which are known as spin magnetic moments. मतलब ये बोर मैग्नेटॉन के साथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स भी रहता है, दोनों ऐड हो जाता है. मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम एज बोर मैग्नेटॉन, ये भी एक है. ठीक है, सो एम स्पिन की वैल्यू भी हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. The net magnetic moment of an atom is the vector sum of orbital magnetic moment and spin magnetic moment. Now one may think that every atom has magnetic moment associated with it. So every material which is made up of atoms and electrons eventually should possess magnetic properties. But this is not so. Most of the substance do not possess magnetic properties. An atom that consists of many electrons has most of them paired. Most of them are paired. Only one will be without a pair. So pair में क्या होता है? The net magnetic dipole moment gets cancelled out because वो नॉर्थ साउथ वाला बात हो गया. अगर किसी को मैंने रिवर्स कर दिया तो कैंसल आउट हो जाएगा. तो इनका स्पिन अलग रहता है. दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं लेकिन स्पिन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं. अगर स्पिन का डायरेक्शन ऑपोजिट है मतलब तुम्हारा स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो गया. An atom that consists of many electrons has most of them paired. In figure 5.4, electrons that lie in the same orbit are paired and they revolve and spin opposite to each other. They revolve and spin opposite to each other. तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, तुमने सबने पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल. तो ऑर्बिट नहीं होती, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं और ये ऑर्बिटल्स दोनों एक ही ऑर्बिट का पार्ट है या एक ही शेल का पार्ट है. तो एक शेल में दो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है रिवॉल्व करने का. यस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व भी कर रहे हैं और स्पिन भी कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे. That is why normally all materials are not magnetic. Magnetic materials do have unpaired electrons in their atom. Spin and orbital magnetic moments of an unpaired electrons are not cancelled by the other electron, and so there is a net magnetic moment in the atom. We already know that a current loop is just like a magnet, but these atomic magnets are randomly oriented, and so overall magnetic moment of the material may still be zero. Hence, every atom of magnetic material is one complete magnet with its north pole and south pole. But due to random orientation of these atomic magnets, these materials may not show up net magnetic field. But when they are exposed to some external magnetic field, then due to torque on atomic magnets,
by external magnetic field. These tiny magnets are aligned with each other in the direction of external magnetic field to produce net magnetic field of their own. This process is called magnetization. मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेट्स, छोटे छोटे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो सारे अलाइंड हो जाते हैं, एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ iron, nickel, and cobalt, which are magnetic materials. Not in the case of other, because उसमें तो कैंसल आउट ही हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट डजंट हैपन. सर ये रैंडम है कोई भी, उसमें प्रॉपर ऑपोजिट रहता है. यस, प्रॉपर ऑपोजिट. In figure 5.5b, we can see that normal situation of all magnetic moments are randomly oriented, but on application of some external magnetic field, these tiny magnets experience torque to get aligned in the direction of applied magnetic field. Here you should understand that the first figure is just for illustration purpose, because practically you never align all the magnetic moments. Never all, only few, and that's why the magnetic properties. There is some randomness in the system due to temperature, or we can say due to thermal vibrations. Alignment of these magnetic moments gets disturbed. So for a certain magnitude of applied magnetic field, we can say that some percentage of magnetic moments gets aligned in the direction of external magnetic field. Some of them are continuously displaced by thermal energy, and other gets aligned in the meantime. So you get an overall magnetization of the material due to presence of external magnetic field. Overall, not absolute. तो मेरे को ये पॉज करना दो. Few important terms related with magnetism. We shall now define certain terms which are used to describe phenomena of magnetization. बहुत ब्राइट है, बट यहाँ से अच्छा दिख रहा है, यहाँ से ब्राइट दिख रहा है बहुत. When we place a magnetic material inside an external magnetic field, it develops a magnetic moment, and the magnetic field intensity inside it is also found to be different from external magnetic field intensity. मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी चेंज हो जाती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वजह से एडअप हो जाता है. बट ये एडअप सब में अलग अलग एक्सटेंट पे होता है, बिकॉज एवरी मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफरेंट इन इट्स ओन नेचर. सो उसको स्टडी करने के लिए यू मस्ट नो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. दैट्स द फर्स्ट टर्म. Intensity of magnetization is defined as the net magnetic moment generated per unit volume of a magnetic material when it is placed in external magnetic field. Net magnetic moment generated per unit volume of magnetic material when it is placed in external magnetic field. So capital M है net magnetic moment developed by the material with volume V. The intensity of magnetization I can be written as M by V. I is equal to M by V. Intensity of magnetization is a vector quantity. Its dimensional formula is L raised to minus 1 times A. And its SI unit is ampere per meter. Let us first apply equation 4 for a bar magnet of pole strength plus minus M and length L and area of cross section A. Then magnetic moment will be ML and its volume will be AL. So intensity of magnetization will be M by V or ML by AL or M by A. So I is equal to M by A. That is your formula. From equation 5, we get to know that intensity of magnetization of a bar magnet is equal to its pole strength per unit cross section area. Second term, magnetic flux
and magnetic flux density or magnetic induction. Magnetic flux associated with a surface is defined as the number of magnetic field lines passing perpendicularly through it. It is a scalar quantity, and mathematically magnetic flux is defined as dot product of magnetic field intensity and area vector for that surface. Phi is equal to B times A, which is same as your electric flux, which is phi. It was just phi, right? Just phi is equal to E times E dot A. If we assume the angle between B and A to be theta, then we can write the magnitude is magnitude of magnetic flux by BA cos theta. For theta 0, magnetic flux is maximum and it is given by BA. SI unit of magnetic flux is Weber and dimensional formula is ml square T raised to minus 2 A raised to minus 1. From equation 6, we can express B as phi B by A. B is your magnetic field strength, phi B by A. From equation 7, it can be concluded that magnetic field intensity can also be expressed as the magnetic flux passing perpendicularly to the surface of unit area. So the magnetic field intensity is also known as magnetic flux density or magnetic induction. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये किसका दूसरा नाम है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मतलब बी का, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन और किसी को भी बोला था ना वो लोग ने. यस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही बोला था. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. So we can define magnetic flux density as the number of magnetic field lines passing normally through a surface having a unit area. When an object with non-zero intensity of magnetization is placed inside external magnetic field, it is found that magnetic field intensity inside its volume is greater than B external. That means some magnetic field must be induced inside the object. Let the magnetic field induced will be Bi. So B is equal to B external plus Bi. So net magnetic field intensity inside the object is B external plus Bi. Magnetic field intensity induced is proportional to the intensity of magnetization. The relation between induced magnetic field intensity and the intensity of magnetization is given by Bi is equal to mu naught times I. That is induced magnetic field intensity inside a material is mu naught times I. What is I? Intensity of magnetization. Intensity of magnetization. So magnetic field becomes, the net magnetic field becomes B external plus mu naught times I. Here mu naught is permeability of free space. You should remember that by multiplying mu naught with intensity of magnetization, you get equivalent magnetic field induced. This is equivalent magnetic field induced inside the magnetic material. इसके बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है इसमें, कंफ्यूज होने के चांसेस है. मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक इंटेंसिटी. The magnetizing field vector or magnetic intensity H for an external magnetic field which is applied to magnetize a material is an important term that is used in description of magnetization of a material. Let B external be the net external magnetic field applied to magnetize a certain substance. Then corresponding magnetizing field vector can be obtained just by dividing B external by mu naught. So H is B external by mu naught. Magnetizing field vector. Magnetizing field vector. क्या समझ सकते हैं हम लोग इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर से? मतलब
the extent of magnetization which is produced in a material, it is given by this magnetizing field vector. जितना h ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा एक मटेरियल, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और म्यू नॉट पे डिपेंड करता है. म्यू नॉट की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए. म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है वैसे, मतलब परमिएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए, तब एच ज्यादा होगा, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर बड़ा होगा. सिंस डायरेक्शन ऑफ आई एंड एच आर सेम, आई क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके अंदर होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके अंदर होता है? मटेरियल के अंदर होता है. ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट, नहीं, एम बाय एम बाय वी. एम बाय वी. एक मिनट. एम बाय वी, करेक्ट. सो एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और वी है वॉल्यूम. इनके नाम भी बहुत कॉमन, हाँ मतलब, सब में आता है। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो अलग है. ओके, सो since the direction of I and H are the same, the net magnetic field inside the material in presence of an external magnetic field can be written as follows. ये हमने पहले भी लिखा था. ये क्या था? नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल. बी इंटरनल था म्यू नॉट टाइम्स आई, बी एक्सटर्नल अभी मिला हमको एच टाइम्स म्यू नॉट. सो म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस म्यू नॉट टाइम्स एच, म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस एच. To write equation number 10 above, we have multiplied mu naught with I and H to get corresponding magnitudes of equivalent magnetic field. Note that I and H are added together in equation 10, so they must have the same unit, ampere per meter, and dimension. We can express the magnetizing field vector as H is equal to B external upon mu naught minus I. In equation 10, the magnetizing field vector represents the effect of external magnetic field, and the intensity of magnetization I is dependent on nature of the material. Magnetic susceptibility. The intensity of magnetization is found to be proportional to the magnetizing field vector. Yes, and hence मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर होगा उतना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा. तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो अगर इक्वालिटी की साइन डाले तो एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज काई. ये जो एक्स जैसा दिख रहा है दैट इज काई. काई पहले वाले में भी एक चैप्टर में पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेकंड वाले में कैपेसिटेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काई था उसमें. ऐसा ही साइन है कुछ, इसे क्या बोलते हैं? देखना पड़ेगा यार, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा उसको. आई एम नॉट श्योर. ये मुझे लग रहा है करंट में था ये. मुझे करंट की याद आ रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज थे छोटे छोटे. नहीं था? ठीक है. सो ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल. An important point to be noted here is that equation 11 is valid only for paramagnetic and diamagnetic materials. We shall discuss in next section जो नहीं है तुमको. Mathematically, magnetic susceptibility is expressed as the ratio of intensity of magnetization and magnetic intensity.
एक मिनट, एच का नाम क्या था? नहीं यार, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर। दूसरा नाम था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। It is a unitless and dimensionless quantity. It is a constant since I and H have the same dimension in unit. Further, this can be simplified. That equation number 10, उसमें हम लोग ने क्या लिखा था? H I plus H था ना, तो उसमें I chi is equal to I plus H था, तो I की जगह पे हम लोग डाल सकते हैं H chi H, और फिर H को कॉमन ले सकते हैं, तो वी गेट दिस mu naught times chi plus 1 times H. So that is B is equal to mu H. Mu naught into chi plus 1 is mu. Oh, we already know that mu naught is magnetic permeability of free space or vacuum. In the above equation, mu is magnetic permeability of a material which is magnetized, and it can be written as this. ये एक important relationship. So equation 14 can also be rewritten as mu is equal to mu naught times mu r, relative magnetic permeability. Mu r 1 plus chi होता है. Mu r is called relative magnetic permeability. You can compare the relative magnetic permeability of material with dielectric constant of insulating materials in electrostatics. That is mu epsilon. Epsilon r था या सिर्फ epsilon था? रिलेटिव एप्सिलॉन आर था। और epsilon क्या था? बस किसी भी मटेरियल का एप्सिलॉन, वो नहीं, वो एप्सिलॉन नॉट epsilon था। नॉट था. वो किसी भी मटेरियल एप्सिलॉन। बट मुझे लगता है epsilon और epsilon r सेम है. वो डिपेंड करता है, मतलब when you use it. You can compare relative magnetic permeability of a material with dielectric constant of insulating materials in electrostatics, but note that in case of dielectric material, when an external electric field is applied, the net electric field inside the material always decreases. Also, the net electric field inside the dielectric material can be calculated by dividing, oops, by dividing external magnetic field applied by dielectric constant K of the material. But in case of magnetism, the net magnetic field inside the material medium is calculated by multiplying relative magnetic permeability of the material. उधर हम K से divide करते थे, मतलब if you remember, K was, I think so. नहीं सर उल्टा। Are you sure उल्टा? हाँ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट सबसे छोटा है। हम्म. हाँ, हाँ 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 हाँ. पीके वाले में हम लोग वर्ग से छोटे होते हैं। सर इतना याद हमें कि इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ कोई भी रख लो, मतलब एफ मीडियम कोई भी, तो वो पता एप्सिलॉन चल नॉट जाएगा। बाय एप्सिलॉन सही था. नहीं सर, सही था. चेक कर लो। एक मिनट, बाद में चेक करना, मैं इसके बारे में हम लोग जाएंगे आगे. एनीवेज, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स बी एक्सटर्नल है, म्यू आर, एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी है म्यू आर. म्यू आर का वैल्यू क्या है? 1 प्लस काई, या फिर म्यू आर इज म्यू बाय म्यू नॉट. म्यू आर इज म्यू बाय म्यू नॉट. ठीक है. सो B is equal to 1 plus chi times B external, or E is equal to E external by epsilon r.
So equation 18 belongs to electrostatics and it is written here just to compare with equivalent equation 17. हम्म ये पता है हमको, लेकिन वो एप्सिलॉन नॉट वाला एक बार देखना पड़ेगा. ये नहीं है ना, दिस यू डोंट हैव द होल थिंग. सर ये जो ऊपर ई के टर्म्स में था ना, उससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं. हाँ, ई से एफ आ जाएगा और एफ से वो आ जाएगा. करेक्ट. मुझे देखने दो हमारा हुआ है कि नहीं है. फेरोमैग्नेटिज्म. वी आर डन. हाँ, ये तो हो गया अभी बस इस तरह से. हिस्टेरिसिस, लास्ट टॉपिक. ठीक है, आज हम लोग ये लिख लेते हैं एंड विल एंड इट. सर ये जो टॉपिक अच्छा था या फिर ऐसे ही? कौन सा? ये जो टॉपिक डिलीट हुआ. ठीक था, मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट. अभी तक जो हमने किया वो डिप वाला, वो सब इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट.